Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are fine at your ends. And the point with which I would like to start my class is just this is a very precious time for you people, that you are getting sufficient time for your revision, for your practicing, to clear the concepts which left behind. ठीक है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ये मिल रहा है कि आप इस टाइम को अवेल कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, अपनी कुछ ऐसे लेक्यूनास जो वीकनेस आपको लग रहा था कि मैं वो कवर नहीं कर पा रही हूँ, एंड यू आर गेटिंग द सफिशेंट टाइम फॉर दिस. बट प्लीज़ डोंट फील आफ्टर द टाइम पास कि मेरे पास तो काफ़ी सारे मंथ्स अवेलेबल थे एंड आई वेस्ट माई टाइम, because these are your board classes in which you can say unlimited time is insufficient. जितना भी आपको वक्त मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए, वो आपको कम लगता है. Now I will start my class. This is just my advice for all of you, that don't waste your time. Keep on practicing, keep on learning your subjects, and focus on studies. Let's proceed. Today's the topic for the accounting is your accounting MCQs. This is as per the board paper pattern. We have, as per the board paper pattern, we have the few class, you can say the questions which I keep in my mind. Now what I have to do, the first of all I would like to start the concept with the brainstorming. The following basic accounting quiz which I found for you is related to the accounting theory, the basics of accounting, the journal accounting, and the financial accounting and cost accounting. Okay, so these are the you can say concept which I will discuss with you in your MCQs. This is as per your board paper pattern. सो दैट्स व्हाई आई डिज़ाइन, मैंने टॉपिक्स उसमें स्टार्टिंग में इसलिए मेंशन कर दिए हैं ताकि बिफोर स्टार्टिंग दीज एमसीक्यूज़ आपको अंदाज़ा हो कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कवर हो रहे हैं. बेसिकली अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली लेके चलूँ तो दिस विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स थ्रियोटिकली. बाकी आपकी जितनी भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं एज पर यू रिड्यूस सिलेबस, वो आपके एमसीक्यूज में इंक्लूडेड है. ठीक है. नाउ दिस इज योर फर्स्ट एमसीक्यूज. आई वुड लाइक यू पीपल टू शेयर, लाइक यू कैन से सॉल्व विथ मी, देन आई विल शेयर द आंसर्स. The first MCQs in front of you, the main source of generally accepted accounting principle, GAAP. ठीक है, इसको हम गैप बोलते हैं. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर related to company law, accounting standards, then both A and B can be true or none of the above. So you have to find out and pick the appropriate answer. इसमें से आपने अपना best answer choose करना है. What you have to do, take a separate sheet of paper, write it down the numbering from 1 till 30, and then inshallah we will try to solve the 30 MCQs today, and then write it down just the A B C D. Like number 1 can be have a correct answer D, so you have to write the correct answer. 1 is D. Clear? Okay. So I am giving you the time again. What you have to do, you have to find out the appropriate answer. The main source of generally accepted accounting principle, gap, is company law, accounting standards, both A and B, and none of these. Okay. Yes, now I proceed towards the number 2. What standards are used to prepare the financial statements by most of the countries and company? So we are here considering the standards, that what are those accounting internationally standards. We have international financial report standards, we have international financial reporting standards, accounting standards, international accounting and auditing standards, international risk and reporting standards. This you will find in your chapter 3 and chapter 1 also, theory. Okay. So financial statement, this is a topic which you have already gone through in your first year also. Plus in financial statement, the balance sheets are, you can say, important essence of every chapter. ठीक है. सो यू मस्ट नो कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, सो व्हाट इज़ दैट, यू कैन से स्टैंडर्ड, वो उसका जो फॉर्मेट है वो हम किस फॉर्मेट को फॉलो करके बना रहे होते हैं. सारी कंट्रीज क्यों सेम फॉर्मेट्स को फॉलो करती हैं, और अदरवाइज एवरी पर्सन और एवरी यू कैन से द कंपनीज और द कंट्रीज विल हैव डिजाइन देयर ओन, यू कैन से द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट. नाउ आई प्रोसीड टूवर्ड्स द थर्ड वन. ओके.
My third MCQs, you have to write it down the correct form of accounting equation. This is again as per your reduced syllabus. We have the option number one, assets plus liabilities is equals to equity. Then we have assets minus liabilities equals to equity. Assets minus accounts receivable is equals to equity. Assets plus receivable is equals to equity. So what is the appropriate? I'm asking here the basic accounting equations. Okay, so you have to focus over here the basic of, you can say, the formula for the accounting equation which proves even your balance sheet also. ठीक है बेटे? So वो appropriate answers pick करिए. Then at the end, after the 5 MCQs, I will share the answers with you also. So hope so you all are doing with me. Then I proceed for the number 4. Wait, I'm dragging it up. Yes, we have this one. It is very, you can say, tricky one, but again, as you are in senior standards, so you all must know. A company sold goods worth is 5,000 on June 5th. So you have to collect the data. सबसे पहले जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसे MCQs आएंगे, आई इवन गाइड यू कि आपने सबसे पहले उसकी डाटा फॉर्मेशन करनी है कि हमारे पास गिवन डाटा कौन कौन सा है और उसमें उन्हें क्या रिक्वायर्ड फाइंड आउट किया, एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर. ठीक है? The company sold goods, it's the worth is 5,000 and 10,000 on 28 June. So this is the your data. The company received the first payment on 25th June and second on 7th July. The company prepared the financial statement on 30 June. What will be the total sale of the financial statement? So definitely the sales and purchase, after you can say apply the sales minus purchase, you will get the formula and you will get the value. Here you have to evaluate what will be the amount of sales only. Okay, and they definitely have given you the extra or some more जैसे ट्रिक करने के लिए आप लोगों को कुछ कॉलम्स या कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वैल्यूज ज़्यादा भी दी जाती हैं. याद रखिएगा एग्जाम में जो भी आपको वैल्यू दी जाती है, इट डजेंट मीन कि आपने उन सारी वैल्यूज को यूज करना है. ठीक है? यू हैव टू फोकस ओनली द कोर कॉन्सेप्ट्स. नाउ वी हैव द फिफ्थ वन. ओके, this is your fifth one. Yes, advance payments are recognized as, number one, definitely you must know कि जब हम किसी से advance payments ले रहे होते हैं, received in advance कर रहे होते हैं, so your advance payment will be recognized as your receivable, your payable, your bad debts, and none of these. Okay, so here on your screen you have the 2 MCQs right now. I'm giving you some time, please solve it. ठीक है? Yes, take your time. Yes, please. Now I proceed. These are your answers of your MCQs. I have compiled these MCQs just to give you a time कि आप लोग पहले शुरू के 5 MCQ सॉल्व कर लें, उसके कॉन्सेप्ट्स अपने आपके पास क्लियर होने चाहिए. ठीक है? आप अपने आंसर्स को इवेल्युएट कर सकें कि मेरी मुझसे क्या गलती हुई थी. ठीक है? एंड फॉर योर सेफ एंड सिक्योरिटी, अगर आप इन MCQs का आपको PDF, if you want your PDF, then you can ask me in your comment section if you want PDF, or if you want more question or queries, you want to understand any MCQs, तो उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमारा आंसर ये आया है और उसका आंसर जो मैंने करेक्ट आंसर मार्क किया है वो डिफरेंट क्यों है. ठीक है? So your first answer is C, both A and B. सेकेंड आंसर इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. हमारी जितनी भी बैलेंस शीट्स बनती हैं बेटे, जो भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, कैश फ्लोज बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, दीज आर वी आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम IFRS भी कह रहे होते हैं. अच्छा जी, देन हमारे पास है बेसिकली यू कैन से इक्विटी इक्वेशन दे हैव आस्क्ड यू. ठीक है? इक्विटी इक्वेशन में हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है वो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है. देन अगर हम लाइबिलिटीज़ के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करें तो लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू एसेट माइनस इक्विटी, और इक्विटी की इक्वेशन देखें तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़. करंटली आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो इक्विटी इक्वेशन लिखा हुआ है, जो इसमें से आपको इक्वेशन थी उनमें से ये एक इक्वेशन आपके पास करेक्ट थी. बेसिकली इक्विटी इक्वेशन और लाइबिलिटी इक्वेशन को हम ड्राइव इक्वेशंस कहते हैं.
मतलब एक हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, जैसे जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन की जो बेसिक्स कहते हैं वो एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को कहते हैं। मींस योर राइट हैंड साइड विल बी योर इक्विटी साइड जिसमें लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं, एंड योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर एसेट साइड। देन नंबर 4 वी हैव ओनली द सेल्स अमाउंट, आपको सिर्फ सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, दैट विल बी योर 15,000, एंड द फिफ्थ वन इज योर अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, so I proceed towards the more MCQs, otherwise we will have the shortage of time for the solution. Yes, this is your, what from the following is not a current asset, which one is not the current asset, you have to find out which one is not your current asset. We have number A is your patents rights, B is inventory, C is cash, D is your trade receivable, and you have to find out which from the following or which one of the following is not a current asset, इनमें से कौन सा current asset नहीं है. Then we have what from the following is not a non current asset. Non current assets को बेटे हम लोग fixed assets भी कहते हैं, ठीक है. So you have to know the what are your non current assets and your current assets, ठीक है. और हमारे पास assets increase and decrease कब होता है. फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव जब भी आप लोग अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, व्हाट यू पीपल हैव टू डू, आपने अपने पास टू मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ग्रिप करना है. यू मस्ट नो कि आपके पास जो भी इस वक्त इन्वेंट्री या आइटम मौजूद है उस आइटम का आपके पास रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट उसकी नेचर आपको पता होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर गिवन है. लाइक अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर का आपको उसकी नेचर और उसका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए. यू मस्ट नो द रूल एंड द नेचर. So which from the following is not current assets? We have options, it's capital, option B is property, option C is patents rights, and then number D is your inventory. Now I proceed further. What from the following is not or are not the tangible assets? We have two types of assets ना. हमारे पास current assets divides होते हैं tangible and intangible. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं assets की तो assets खुद divide हो रहा होता है current assets and fixed assets. Then हम further उसको distribute करें तो current asset divide होता है tangible और intangible में. So tangible is that can you can see or touch. ठीक है, तो हमारे पास tangible क्या आ गया, that you can see or touch, but they are asking which of the following is not tangible. Okay, so you have to focus the statement what they are asking you, क्या पूछ रहे हैं, you have to focus on the statement. ठीक है, अच्छा जी. Then number 9, hope so you are solving with me or I should give you some time. Wait for a while, I think I'm going a little bit speedily. Take your time please. Now I'm proceeding towards the MCQs number 9. In MCQs number 9, we have a machine price was 1,000 and was carried through a truck. Okay, the truck fare were 500. Okay, and the engineers charge 500 for the installation. What will be the cost of machine? It is very, you can say, good MCQs, very interesting. You all must know how we can calculate the cost of machine. So you have to do the working of this MCQs also. Keep your working at a side. जब एग्जामिनेशन में बोर्ड परस्पेक्टिव से whenever you are solving such MCQs, डाटा कलेक्शन के बाद जो भी अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो उस फॉर्मूले को की एप्लीकेशन आपने अपनी वर्किंग में शो करनी है. सो स्टार्ट डूइंग योर वर्किंग और द कैलकुलेशंस फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन. English or the language which I'm using over here is little bit changed so that you people can be you can say understanding every type of you can say statements which will be given in the examination. So यहाँ पे machine की जो list price है, the price of the machine or the list price is 1,000, was carried through a truck and the truck fare is your transportation. The engineer charge for the installation. अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास installation जो है वो capital expenditure में आता है या revenue expenditure में आता है. ट्रक की जो फेयर है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. प्लस आप लोगों को बेटे यहाँ ये बात भी पता होना चाहिए, यू मस्ट अवेयर कि कॉस्ट ऑफ मशीन में हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड होता है या लेस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होता है या लेस होता है. सो यू मस्ट नो हेयर द फॉर्मेट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ मशीन. जो हम लोग पूरी कैलकुलेशन करते हैं, लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट्स,
cash discounts, and then we have the, you can say, invoice price, and then we have you can say expenditures. अभी आपके साथ answer exactly discuss नहीं कर रही हूँ, so because you are solving it right now. Now I'm proceeding towards your 10th MCQs. Now it will be on your screen right now. Depreciable amount is equals to, A is cost plus residual value, cost minus residual value minus cost of asset, and none of these. So you have to find the appropriate answer. Depreciable amount is your depreciable cost. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपके पास depreciable amount पूछी है. It is your depreciable cost, जिसकी आपको total cost plus या minus जो भी आपके पास value है आपको निकालनी चाहिए. And you must know the formulas. मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा formulas discuss किए हैं in your class कि हमारे पास depreciable cost कैसे calculate होती है, then book value कैसे calculate होती है, और accumulated depreciation क्या होता है. So these are the basics which I would like to share, कि जो ऐसे concepts हैं जो आप लोग को बहुत अच्छे से आने चाहिए. So take your time, please write the appropriate answers, please. Okay, now I will proceed towards the answers. Yes, we have the answers over here. Number 6 is your patent rights. Number 7 is your inventory. Number 8 is 1 and 2 only. Number 9 answer is 2000. And number 10th answer is cost of asset minus residual value. Okay. Write your answers, check your answer sheets कि आपके कितने MCQs सोल्यूशन के बाद करेक्ट हो रहे हैं, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हमें कितनी अकाउंटिंग आती है और हमें कितना फोकस करना चाहिए. ओके, सो कीप योर एनर्जीज हाई. ओके, नाउ आई प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मोर MCQs with you. Yes, the number 11, the accounting process of allocation of cost of intangible assets is called number 1, amortization, depletion, going concern, and residual value. This is again from the, you can say, your chapter of depreciation. We have the accounting process of allocation cost of intangible assets. Intangible assets, as I told you, tangible assets that you can see or touch, intangible that you cannot see or touch. ठीक है, तो ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि कॉस्ट को एलोकेट करे इंटेंजिबल एसेट्स का. प्लीज़ याद रखिएगा हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं. डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन. मैं आप लोगों के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुकी हूँ इन माई प्रीवियस वीडियोज़, जब मैंने आप लोग को डेप्रिसिएशन स्टार्ट करवाया था, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन और अप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे पास, एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कौन कौन से होते हैं, गोइंग कंसर्न्स है, उसकी क्या फी है, अक्रूअल प्रिंसिपल्स है. वी हैव डिस्कस दिस थिंग. सो फाइंड योर एप्रोप्रिएट आंसर्स. I proceed towards number 11 also with you. Wait for a while. Yes. The process of recording consumption of natural resources or wasting assets is called, you have to write it down, the recording consumption of natural resources. We are consuming natural resources over here. That means amortization, depletion, going concern, and residual value. This is all 11 MCQs and 12 MCQs related to your theory. ठीक है, अगर आप लोग थ्योरी भी अकाउंटिंग की फोकस करते हैं या अकाउंटिंग को समझ के पढ़ते हैं, सो दैट यू कैन फाइंड योर करेक्ट आंसर ओवर हेयर. ठीक है बेटे. ओके, आई प्रोसीड. Here on your screen you have MCQs number 13 and 14. The concept that the enterprise will continue in a foreseeable future is known as, it means there is some uncertain situations in which कोई भी कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को foreseeable future के लिए कंटिन्यू रखती है. उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, amortization, depletion, going concern और residual value. As the name of, यानी एग्जैक्ट डेफिनेशन ही आपको कंटिन्यूएशन में बता रही है कि their enterprise will continue, okay, in a foreseeable future. So आपको amortization, depletion, residual value and going concern, इसमें से ऑप्शन पिक करने में बहुत आसानी होगी. You can choose it very easily.
What from the following is not a capital expense? We have purchase of property, purchase of office equipment, replacement of a vehicle, repair of a vehicle. This is from the chapter again from the depreciation, in which you have to differentiate between capital expenditure and revenue expenditure. So choose your appropriate answer, please. Here in these MCQs, you have to, sorry, I wait for a while, please. You have to focus in these MCQs basically, that they ask you which of the following is not capital expense. So don't be mixed up that they are asking you कि capital expense कौन सा है, वो पूछ रहे हैं कि कौन सा capital expense नहीं है. So you have to read the statement properly with complete focused. Okay, now I'm with you on the 15th MCQs. An item of equipment costs 300,000 and has a residual value of 50,000 at the end of its expected useful life of 4 years. What is the depreciable amount? So you have to calculate it. Depreciable amount DC, यानी depreciable amount की जो भी आपके पास formula होता है, total cost minus whatever, you must know data आपके पास given है, अपना formula apply करें total cost minus salvage value का, and then you can find the value very easily. So here we have done the 15 MCQs till now. Do your working for such you can say MCQs. You have to show your working, you have to show the formula for the depreciable amount. In your board examination, you have to put the heading of working, write the formula, do the working, and then choose the appropriate answer. If you have done the sufficient practice, तो definitely आप exam में भी उसको fastly और speedily कर लेंगे. Otherwise you will take time and your time will be lose up. Okay, so kindly solve this MCQs little bit faster, then I will share the answers with you. Yes, here on the screen you can see the answer. Number 11 is amortization. Number 12 is your depletion. Number 13 is your going concern. Number 14 is repair of a vehicle. And number 15 is 250,000. Clear? I proceed towards more MCQs. Yes, we have number 16. The expected disposal value, okay, of the asset after deducting disposal cost at the end of its expected useful life is called dash. Residual value, net book value, depreciation, substance over form. This is the definition of the term, जो कि आप लोगों को मैं एक हिंट दे देती हूँ. हम लोग डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू. सेल्वेज वैल्यू के जो सिनोनियम्स होते हैं, सेल्वेज वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, और उसको डिस्पोजल वैल्यू भी कह रहे होते हैं. सो एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट, जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, यानी डिस्पोजल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू, या फिर हम उसको रेजिडुअल वैल्यू भी कह रहे होते हैं. आफ्टर डिटेक्टिंग द डिस्पोजल कॉस्ट इज मीन्स वंस इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ, then you will call it as a residual value, net book value, depreciation, or substance over form. So you can choose the best answer. मैंने आपके साथ सब कुछ तो डिस्कस कर ही दिया है. I explained you even the figure that appears in the statement of financial position after the depreciation is known as substance over form, residual value, net book value, and depreciation. So you have to find out the appropriate answer. What will be your you can say book value they were asking you over here. ठीक है, the formula of book value, the figure that appears in the financial statement. आप लोग को याद होगी कि बैलेंस शीट में हम किसी भी फिक्स एसेट की हमेशा एक वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं. इट मीन्स टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड योर आंसर, टेक योर टाइम, सॉल्व इट. यस, नाउ आई प्रोसीड. ठीक है, होप सो यू हैव डन, अदरवाइज हमारा टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा ना बेटे. Which
फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट इज़ नॉट डेप्रिशिएटेड, ऐसे कौन से हमारे पास एसेट्स हैं जो कि डेप्रिशिएट नहीं होते हैं? यू हैव टू राइट इट डाउन द ऑप्शंस. Number one is your advance, number two is your lend, and number three is machinery. Which from the following asset is not depreciated? वो बताने जो कि डेप्रिशिएट नहीं होते. ओके, सो कीप द वर्ड्स इन योर माइंड व्हाट आई एम आस्किंग यू. ठीक है, स्टेटमेंट्स को आपने मिक्सड अप नहीं करना है. सिर्फ ये नहीं सोचने का अच्छा डेप्रिसिएशन पूछिए तो फ़ौरन से वो वाला बता दें जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. नहीं, आपने वो बताना है जो कि डेप्रिशिएट नहीं होते हैं. ठीक है बेटे, राइट योर एप्रोप्रिएट आंसर. अच्छा देखिए ऑप्शन उन्होंने किस फॉर्म में दिए हुए. वन ओनली, उन्होंने कहा सिर्फ एडवांस ऐसा है. नंबर टू ओनली, सिर्फ लैंड ऐसा है जो डेप्रिशिएट नहीं होता. नंबर सी वन एंड टू, एडवांस एंड लैंड दोनों डेप्रिशिएट नहीं होते. डी इज़ योर टू एंड थ्री, यानी लैंड और मशीनरी दोनों डेप्रिशिएट नहीं होते. सो यू हैव टू फाइंड द एप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, अमंग ऑल दीज आई प्रोसीड टू वर्ड्स नंबर 19. डेप्रिसिएशन इज नॉर्मली चार्ज एज, डेप्रिसिएशन को नॉर्मली हम किस लाइक ट्रीट क्या करते हैं, उसकी नेचर क्या होती है? इट विल बी चार्ज एज पेएबल, इट विल बी चार्ज एज रिसीवेबल, इट विल बी चार्ज एज एक्सपेंस, और इट इज़ योर एडवांसेस. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द डेप्रिसिएशन. We have solved till 19. Now let's focus towards your MCQs number 20. Then we have to discuss the answers also. Your MCQs number 20 is on your screen now. Yes, a company purchased a non-current asset in Air First, ठीक है, for 90,000. एयर फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है, जैसे आप 2007 भी ले सकते हैं. आप नेक्स्ट ईयर जो होगा वो आपके पास 2008 होगा. सो डेफिनेटली मैंने एयर फर्स्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. द डेप्रिसिएशन चार्जेस 15,000. नॉन करंट एसेट हम कहते हैं अपने फिक्स एसेट्स को. फिक्स एसेट्स कोई भी हो सकता है. यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग, फर्नीचर, एनीथिंग. उसका फर्स्ट ईयर में उसकी कॉस्ट है 90,000 जिसको आपने परचेज किया है. डेप्रिसिएशन इज योर 15,000. वॉट नेट बुक वैल्यू वुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल पोजिशन? अब आप इसकी नेट बुक वैल्यू यानी बुक वैल्यू इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं बेटा बैलेंस शीट को. बैलेंस शीट में आप इसकी क्या कॉस्ट लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. ठीक है, यानी 2007 अगर आपने फर्स्ट ईयर लिया है तो 2008 की बैलेंस शीट जो बन रही होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी 2007 की जो बैलेंस शीट बनेगी वो आप उसमें एंड ऑफ द ईयर में क्या रिकॉर्डिंग करेंगे. You have to write your answers appropriately. अच्छे से सोचें. The depreciation charge is 15,000. The purchase is of non-current is 90,000. So you have to write it down the balance sheet in year 2. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है वो सिर्फ एक साल की दी हुई है. दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एंड दे आर आस्किंग यू द बुक वैल्यू फॉर द सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन. कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके, टू फाइंड द करेक्ट आंसर. The total cost is 90,000. This is the depreciation for the first year, 15,000, and they're asking you the book value for the second year. यानी second year में जो आपके पास value आएगी वो charge करनी है. Now let's come towards the correct answers. Hope so. We have solved it. I proceed further. We have the options right now. Yes. You have the option for number 16. We have residual value is the correct answer. Number 17, we have net book value is the correct answer. Number 18, we have 1 and 2. Sorry. The number 19, we have expenses. And number 20, we have 60,000 is your correct answer. Clear? Okay, so these are your MCQs. Till now we have discussed till 20 MCQs in the today's session, and inshallah in the next session of the MCQs, which is also related to your you can say MCQs related to your model paper for the board exams. Okay, my main concept for making you people aware about the concepts which we have gone through. उन concepts को जो आप लोग कर चुके हैं सारे, उन सब सारे
कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे आपके साथ रिवाइज करवाना चाहती हूँ, सो दैट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव यू पीपल विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, एमसीक्यूज अगर किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे सॉल्व करने आते हैं, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स रियली पुटिंग गुड एफर्ट्स। So this is all for today. Hope so these MCQs are very much hopeful or helpful for you even for your exams preparation. Keep watching my videos for the solution of the MCQs. Thank you so much. Allah Hafiz.